intro, GS geography intro class. So all are you prepared for attending this session? In this session, we are going to discuss about the importance and strategy, how you should complete your geography GS part for both prelims as well for mains exam. Okay. So this session is presented by me, Praveen Chaube. I am the faculty of geography and environment in Carol Unjar IS. Okay. So what should be your strategy for each and every subject? As you all know, in UPSC preparation, there are three stages of exam. Okay, the first stage is your prelims exam. Okay, this will be objective in nature. Let me a little bit give some important your points regarding your exam strategy, or what is your exam all about patterns. So prelims is your objective in nature. So in prelims you have a two paper. So one is called a GS paper 1, and second one is called your CSAT paper. I know most of you know this pattern of examination very well, but some of you are very new. So I will just give you some introduction part. What type of exactly this all exam? So prelims is your objective in nature, GS paper 1. So total number of question that will become in GS paper 1 will be your 100. Okay, and the number of question in CSAT will be your total number of question is CSAT in 80 number. Okay, 80 questions will be there. Marks will be same 200 marks for both the paper, but in prelims exam, CSAT is your qualifying in nature. This paper 2, that will be a qualifying in nature. What is the meaning of qualifying in nature? Means you have to score 33% marks. Okay, to qualify CSAT, how much you have to score? You have to score 33%. Okay, now 33% means that 66 marks out of 200. 66 marks out of 200. Okay, so this is not easy to score 66 marks out of 200, because now every year you see a paper level is increasing very high. Means the tough they are giving a very tough question in mathematics, in your reading comprehension. Everywhere you will see a question will be a very tough. Okay, so you require a little bit preparation in CSAT. So what type of preparation is required? Till class 10. If you know the maths till class 10, then it will be okay. So for example, quant, what type of question will become in quant? Quant question will be from average, okay, percentage, average, percentage, then your mensuration, speed, distance and time, all these things, reading comprehension. So what I will suggest here, you should solve at least last 10-year CSAT paper. Okay, original CSAT paper that already UPSC had asked in prelims exam. If you will solve all 10 last 10-year paper, you will have an idea, and try to check whether you are score more than 66 marks in each of the paper or not. If you are not scoring 66 marks, it means that you require little bit preparation in CSAT. तो आपको CSAT में थोड़ा बहुत तैयारी करना पड़ सकता है. ठीक है. Now GS paper 1, main area here is GS paper 1. So in GS paper 1, total marks will be 200, and negative marking will be here. Okay, 1/3 will be a negative marking. So no subjects, what subject we have to study in GS paper 1? It will be like geography. Okay, it will be like polity, economy, environment. Okay, general science is mentioned in your syllabus. In your syllabus mentioned general science, but most of the question that will be from science and technology. This is very important to understand. In your syllabus, especially in prelims exam, nowhere is mentioned about science and technology. They just mentioned about the general science, but you see question that will become in prelims exam, that will be science and technology. General science means you should know the theory, you should know the concept. In biology you should know the concept what is cell, then you should know science and technology, biotechnological part, like what is stem cells, okay, what is gene editing technology. That will be the part, will be a question in your prelims exam. So to understand science and technology, you should know general science. So current affair, again a current affair is very important here, and history. So these are the subjects in your GS paper 1. Paper 1, that will be 100 questions. Now this session is about geography. Okay, we are going to discuss about geography, what should be your strategy, what book you should read, and I will also take one topic here, just like a demo topic. I will give you some I will choose one randomly, one choose topic, and I will explain all these things. That will help you to know what exactly you have to study in geography GS, and how much information is required.
because you are reading your geography as a GS subject, not as an optional subject. आपको ऑप्शनल में कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ता है, काफी डीप में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्योग्राफी जीएस में कितना आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे आप अच्छा मार्क्स ला सको एग्जाम में, ये हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, बिकॉज you know one important thing is before going to start your preparation you must know the syllabus. If you don't know syllabus, then your idea will be a very different, okay, your approach will be a very different. You will not able to understand from where you have to start, what topic you will going to cover under your subject, under this subject. So that's why syllabus is very important for each and every subject. Each and every subject syllabus you can make a separate note. I will suggest to write the syllabus. आप एग्जाम मतलब जब भी आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप सिलेबस का नोट्स बनाओ, आप सिलेबस को लिखो, एक A4 साइज पेपर ले लो, उसमें सिलेबस को देख देख कर लिखो। लिखने से क्या होगा कि यू विल हैव एंड यू विल दैट सिलेबस, दैट टॉपिक विल बी सेव इन योर माइंड, क्योंकि आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर विल बी वन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और यू कैन से वन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर गेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर करंट अफेयर। सो न्यूज़पेपर में आखिर अब जो हम लोग बोलते हैं ना करंट अफेयर पढ़ना, तो करंट अफेयर हमको पढ़ना क्या है? सो करंट अफेयर में आपको वही चीज पढ़ना है जो कि स्टैटिक पोर्शन का करंट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल इन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हिस्ट्री से बहुत डिफरेंट है। यू विल सी द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, you know the concept called global warming, climate change, you know the concept called why cyclones are becoming more dangerous nowadays। कहीं ना कहीं साइक्लोन्स देखोगे कि हर साल साइक्लोन्स जो है वो काफी डेंजर होते जा रहा। आईएमडी जब भी रिपोर्ट निकालता है, आईएमडी का जब भी फोरकास्ट करता है तो स्टेट गवर्नमेंट को वार्न करता है, स्पेशली ओडिशा, आंध्र प्रदेश, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात है, मुंबई हुआ, पुणे, दिस विल बी लाइक गोवा, ओके, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स गवर्नमेंट को वार्न करते हैं कि साइक्लोन आने वाला, यू शुड रिलोकेट योर पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये साइक्लोन इन द डेंजर क्यों होते जा रहा है? तो ये सब जो करंट अफेयर का जो इंफॉर्मेशन है वो तभी आप समझ में आएगा जब यू शुड नो द बेसिक ऑफ ज्योग्राफी। ओके, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कॉल्ड व्हाट इज इंसुलेशन। अगर मैं बोलूं इंसुलेशन क्या होता है, so if you don't know insulation, if you don't know what is greenhouse gas and why greenhouse gas carbon dioxide is responsible for global warming, why the all over the world international agreement is signed to reduce the emission of carbon dioxide in the atmosphere, ये कार्बन डाइऑक्साइड आखिर है क्या है? तो मैं बोलूंगा कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस ऐसा क्या काम करता है जिससे टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है? तो ये बेसिक पार्ट जब समझ में आएगा तभी जाकर आप करंट अफेयर के जो भी आर्टिकल्स आते हैं ज्योग्राफी में, खास करके इन्वायरमेंट में, तभी उसको आप समझ पाओगे, ठीक है। तो सिलेबस को क्या है सबसे पहले समझना है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि स्पेशली इन ज्योग्राफी, see the syllabus what mentioned exactly in your prelims exam, what you have to study in prelims exam. In prelims exam you have to study in geography India and world geography. क्या है? India and world geography. Now most of the students are confused about the world geography. वो सोचते हैं कि अफ्रीका से क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन अफ्रीका प्रोड्यूसिंग मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। ऐसा ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कर रहा। यहाँ पर जनरल ज्योग्राफी आपको जानना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मींस अगर पूरे वर्ल्ड का अगर विंड पैटर्न के बारे में बात करते हैं, विंड सिस्टम की पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज है, पोलर स्टर्लीज है, जेट स्ट्रीम थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। साइक्लोन्स जो इंडियन ओशन में क्या नाम से जाना जाता है, पैसिफिक ओशन में उसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उसको क्या कहा जाता है, वहां पर वो कैसा रोल प्ले करता है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। व्हाट टाइप ऑफ ज्योग्राफी ऑफ स्टडी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज ज्योग्राफी। So geography derived from the two words called geo. Geo means earth, okay, and graphos or graphy you can say graphos means description, means when we study scientific study of earth in detail, जब हम अर्थ को काफी डिटेल में पढ़ते हैं, हर एक फेनोमेना को स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी। एंड नाउ इट इंक्लूड द हाइड्रोस्फीयर आल्सो। हाइड्रोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, एटमॉस्फेयर इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ओके, लिथोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ये सारे चीजों को जब हम अलग अलग से पढ़ते हैं, दैट विल बी कंबाइंड कम अंडर द फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मींस यू सी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का डिफरेंट फेनोमेना की स्टडी करना, व्हाटएवर द लैंड सरफेस रिलीफ फीचर्स यू सी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर, वैलीज, ये बनते कैसे हैं, इन सब का क्या यूज होता है, कैसे बनते हैं, इनका क्या चेंजेस आते हैं, दैट एवरीथिंग विल बी कम अंडर योर फिजिकल ज्योग्राफी। एंड टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी, geography is divided into two parts. One is called physical geography, another one is called human geography. Okay, human geography is the second part. First part is physical geography. Now to understand human geography you have to understand physical geography.
अगर फिजिकल ज्योग्राफी अब समझ में आ जाएगा तब आपको वहां का सोशल ज्योग्राफी समझ में आएगा, वहां का इकोनॉमिक ज्योग्राफी समझ में आएगा, और वहां का इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, वहां का मतलब पैटर्न कैसा, सेटलमेंट कैसा होगा. So in India, you will see that settlement in North India is very different from South India. When you visit a urban area and rural areas, दोनों का settlement अलग अलग होगा. Urban areas का settlement you will see a concrete construction हर जगह रहेंगे. Rural areas में you will see a very free open ground होंगे, काफी अच्छे मतलब fresh airs होंगे. तो वहां पर settlement different होने का reason क्या है? That will be the social and economic geography, society. Okay, and not only India, you have to study about the world. तो ये प्रीलिम्स में बस इतना ही मेंशन किया है कि इतना आपको ज्योग्राफी में पढ़ना. अब इससे अब कोई भी स्टूडेंट नया है वो क्या अंदाजा लगाएगा फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, सोशल में क्या पढ़ना, इकोनॉमिक में क्या पढ़ना और वर्ल्ड में क्या पढ़ना, कि इंडिया और वर्ल्ड में क्या पढ़ना. तो ये कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट है कि ये 2 लाइन में सिलेबस को डिफाइन कर दिया है. उसके लिए क्या है कि आपको मेंस का सिलेबस देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस स्पेशली इन जीएस पेपर में जब से 2013 में 4 जीएस पेपर हो गए हैं and 1 optional paper, because in 2013 syllabus was changed and instead of 2 optional paper you have to choose only 1 optional paper. So since 2013 your approach of preparation of UPSC exam will be a holistic approach. It should not be a separate for prelims exam, separate for mains exam. You have to collectively study. You will be prepared for mains and that will also help you to clear your prelims exam, क्योंकि आपको बहुत अच्छा से मेंस का काफी डिफाइन और काफी डेप्थ नॉलेज में कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है. दैट विल आल्सो हेल्प यू इन फॉर प्रीलिम्स एग्जाम. सो जीएस पेपर 1 के बारे में बात करते हैं. जीएस, यस, ज्योग्राफी इज योर पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1. टोटल नंबर 4 जीएस पेपर हैं आपको, एंड ईच एंड एवरी जीएस पेपर हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल इन जीएस पेपर 1 in mains exam you have to study history, both India and the world, Indian society, okay, and geography. So 3 to 4 subjects means Indian history you have to study. Also, you have to study about the world history and then Indian society, then geography of India and the world. Now, what are the syllabus given for your geography? GS paper 1. Now, it's given here salient features of world physical geography. Now, when I will say world physical geography, that will include all the 4 topics. That include your climatology, that include your geomorphology, that include your oceanography, and that include also your environmental geography. So that physical geography, world's physical geography, means you have to study climatology in detail, geomorphology in detail, and oceanography in detail. That will be the part of your question will become in prelims exam as well as your mains exam. Now, second important in syllabus point is mentioned here: distribution of key natural resources across the world. In bracket, it is mentioned here, including South Asia and the Indian subcontinent. Okay, factors responsible for the location of primary, secondary, and tertiary sector. Now, primary sector like agriculture activities, allied activities, agriculture activities. Now, you see, southern India, most of the service sector is dominant. Service sector is more dominant in southern India, especially in Pune, Bangalore, all these cities. You will see IT industry is very well flourished. In case of northern India, you'll see agriculture is more flourished. Okay, agriculture means people are their economic activity is mostly agriculture in northern India, northwest India. So what is the reason behind for location of primary? Okay, because of availability of the good soils. Some of the places where soil is not good, and then in that case, IT service sector will be more flourished. Where soil is good, availability of water is good. So obviously that place will have agriculture. Secondary activity where in very close to the raw materials, wherever the raw materials is available, that type place will have industries, very good industries will be there, like iron steel industries will be located very close to the coal, wherever the coal is discovered, wherever the iron ore is discovered. Okay, so that place will have a secondary industries. Now tertiary sector where very easily we can means transfer all the information. So tertiary sector means service sector is. So what are the factors responsible for all this location of this type of activities sectors? Not only India, but you have to study about the entire world and even Indian subcontinent. Third important point is here: industries in various parts of the world, including India. So industries like cotton-based industries, automobile industries, pharmaceutical industries, okay, sugar industries, okay, jute industries, automobile, all these industries, various part of the world, their locations, and why these industries are so famous. Why? What is the reason behind for location of such industries? Why sugarcane industries
sugar industry is located in southern part of India or northern part of India? Why cotton based industries you see in India in states called Maharashtra and Gujarat? Why jute industry you see in West Bengal? Okay, why most of the automobile industry you see in northern part of India? So what are the factors responsible for location of these industries? Okay, that will be the part of your syllabus. Another important, these two phenomena, see these 2 point of your syllabus is very important, that will always every year you see a question be from this area. So here important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity and cyclone. Now earthquakes, as you know, every year some place in India and also all over the world, somewhere earthquake always occurred. So what is the reason behind for occurrence of the earthquake? earthquake हमेशा हर जगह रैंडमली नहीं आता है, इसके पीछे भी एक रीजन है कि आप देखो कि अर्थक्वेक इस जगह पे क्यों हो रहा, स्पेशली इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस बार 2020 में 2020 मेंस क्वेश्चन जीएस में क्वेश्चन आया था कि सरकम पैसिफिक बेल्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, सरकम पैसिफिक बेल्ट। ना सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में आप जब बात करोगे, सो इट इज आल्सो नोन एज रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से है पूरा लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोस ज्यादा हैं, अर्थक्वेक यहाँ पर बहुत होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनिक्स ज्यादा होते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस दिस प्लेसेस? बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, कन्वर्जन प्लेट बॉन्ड, जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे तो कन्वर्जन प्लेट बॉन्ड समझ में आएगा। व्हेन टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग टुगेदर, then one plate is a denser part subduct under the lighter one, so that creates volcanic eruptions. तो वो अर्थक्वेक्स इस जगह पे अर्थक्वेक ज्यादा आएंगे। प्लेट इंटरेक्शन, टेक्टोनिक इंटरेक्शन समझ में आएगा, तब आपको अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। नाउ सुनामी, सम
Sorry for inconvenience. It was some problem, internet problem. So we are discussing here about earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone. Another topic is here geographical features and their location. Changes in critical geographical features, including water bodies, ice caps, and in flora and fauna, and the effect of such changes. So this is your syllabus about geography GS. Now this part is your entirely environment. So whenever you see a question that will come in your mains exam in GS paper 1, geography and environment is more overlapping. So don't confuse. If you want to write a good answer in environment, you must know the geography. So geography every year you will see out of 250 marks. So your GS paper 1 will be a 250 marks, okay? And out of 250 marks, 80 to 90 marks will be from your question will be come from your geography. And you can easily write answer if you will have a basic information. If you know a little bit about the current affair, you know about the melting of glaciers and their consequences, because of the climate change, what are the consequences, what is biodiversity, how what are the reason behind for the loss of biodiversity, how we can conserve biodiversity. Okay, so wetlands, importance of wetland, desertification, most of the topic concept will study in environment also. But before this, main important thing is here to know geography, basic part of geography. Now here is last 10-year number of questions that UPSC had asked from geography every year. So you see in 2011 it was 11 questions, 12 17 questions, in 13 it was 18 14 14 questions, 15 16. So on an average we can say that 12 to 14 questions will be from your geography. Out of 100 questions, 12 to 14 will be your from your geography. So 28 marks to 30 marks, because each question will be your 2 marks, so it will become a 30 marks. Out of 200, 30 marks will be if you will read geography very well, they can easily secure 30 marks. Okay, now here I'm going to take one topic called geomorphology. From geomorphology I will going to take one topic. This is geomorphology, and what are the topics you have to study in geomorphology in GS part. Okay, so first topic is your Earth's interior. Very important to know about the Earth interior. Continental drift theory, convectional current theory, sea floor spreading theory, plate tectonic theory, earthquake, volcano, rock and its types, geomorphic processes, and landforms. Total number of 10 topic you have to study in GS part for your in your geomorphology. From the geomorphology, this is the part of your physical geography. Like geomorphology, we have a topic called climatology, oceanography, then we have Indian geography, some human geography, economic geography. Okay, so when we talk about subtopics, will be cross more than 40 to 50 topics will be there. So each and every topic is important to know, because but nobody know where UPSC will ask question from which part. So I'm going to take one topic here, continental drift theory. This is one important topic. UPSC had a question in mains exam also, and maybe in prelims exam there will be a question about the evidences or anything from the continental drift theory. Okay, so let's discuss this theory. First of all, you know what is geomorphology. So geomorphology is, again you see geo is a word, morpho means descriptions, okay, different forms, and logos means descriptions, means whatever features you see on the surface of the earth, means relief features. Okay, relief features, landforms you see. What is the reason behind for the formation of such a landforms? What are the process required for the formation of landform? For example, mountain. Okay, when we talk about mountains, plains, okay, plateaus, valleys, river valleys that forms. So what is the reason behind for formation of such type of relief features on the surface of the earth? When we study in detail, that we'll call a geomorphology. So it is the study of landforms. Okay, landforms, their processes, form and sediment at the surface of the earth. Okay, so this is the complete see the means geo means earth, morph means forms. So it is the science of description of various form of earth surface. Various forms of earth surface means various relief features, topography on the surface of the earth, and what is the reason behind for the formation of these things. Now in geomorphology you have to understand two important forces. Okay, two important forces responsible for whatever things that is created on the surface of the earth. So one important force is called your exogenetic force,
Okay, exogenetic force, and second one is called your endogenetic force. Okay, as name suggests itself, exogenetic means the force which is coming outside the earth, outside the earth. Okay, means what is the main source? You can say a sun's heat, atmosphere. Okay, this will be come under the exogenetic force, means that force which is coming outside the earth. Okay, like wind, when wind blow, it erode the surface of the earth, it erode the relief features. And other is called endogenetic force, means force which is coming within the earth. Okay, within the earth. So within the earth, whatever the forces coming within the earth, that also creates something on the surface of the earth. So ऐसा आप कह सकते हैं कि this endogenetic force is responsible for creation of relief features on the surface of the earth. जो भी relief features बनते हैं अर्थ के ऊपर, जो भी आप देखते हैं प्लेटू, प्लेन्स, माउंटेन्स, ये सारे बनते हैं endogenetic forces से, और इनको जो इरोड करता है, इनको वियरिंग डाउन करता है, इनको जो तोड़ता है, वो होता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ना। ये दोनों फोर्स ही रिस्पांसिबल होते हैं, दैट इज बोथ फोर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिलीफ फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो एक्सोजेनेटिक फोर्स मींस दैट फोर्स व्हिच इज कमिंग आउटसाइड द अर्थ. जैसे एटमॉस्फेयर, विंड आ रहा, ठीक है, विंड है, सनलाइट है, हीट हो रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हीट हो रहा, फिर कूल हो रहा, उसकी वजह से जो वेदरिंग होगा, that will be the part of exogenetic forces. Endogenetic forces means like plate tectonic theory, that will help you to understand earthquake जो होता है, volcanic eruption होता है, ठीक है, this is all are means responsible because of the endogenetic forces, वो अंदर का force है. So this is why it is very important to know what exactly present inside the earth. अर्थ का इंटीरियर को जानना इसलिए बहुत जरूरी होता है. So that's why we study about the earth interior, that help us to know that crust is the upper part, then mantle is the second lower part, and the core is the third part. So our earth is basically divided into three important part: crust, mantle, core. Earth interior, ठीक है. अर्थ इंटीरियर को भी पढ़ने के लिए हमको बहुत सारे सोर्सेस की जरूरत पड़ती है, जिसमें सिज्मोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जिसको सिज्मोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सिज्मिक वेव्स. सिज्मिक वेव्स को मतलब कहते हैं, आप समझ जाओ, अर्थक्वेक वेव्स. जब अर्थक्वेक आता है तो उस समय एक एनर्जी रिलीज होती है, उस समय एक वेव्स ट्रेवल होता है, वेव फॉर्म होता है. उसी वेव्स को स्टडी जब करते हैं साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट जब स्टडी करते हैं, देन दे केम टू नो व्हाट एग्जैक्टली प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, बिकॉज नॉट अ डायरेक्ट सोर्स. कोई भी डायरेक्ट सोर्स है, आप देखो एटमॉस्फेयर के बारे में अगर जानना है, अर्थ के ऊपर क्या है, तो वी हैव अ डायरेक्ट सोर्स लाइक सैटेलाइट, वी हैव अ रडार, बैलून. Okay, we can take our images with the help of different instruments, but what exactly the instrument that help you to know what present inside the earth interior? So in that case, seismology is one accurate means you can say scientific study that helps scientists to know what exactly, at what depth crust is present, at what depth mantle is present, at what depth core is present. Not only the depth, we also know their formation, their textures. मीन्स मेंटल अगर है तो वो कहाँ लिक्विड में है, कहाँ प्लास्टिक स्टेट में है. कोर है तो कोर कहाँ पर लिक्विड स्टेट में, कहाँ सॉलिड स्टेट में है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, वो भी हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थ इंटीरियर, विद द हेल्प ऑफ सिज्मोलॉजी. But our here we are going to here to study about the plate tectonic continental drift theory. Now continental drift theory is a part of a continent and oceans. So continent ocean is basically is considered as the first relief features on the surface of the earth. सबसे पहले जो अर्थ पे बना वो क्या बना, continent and oceans बना. तो ये थ्योरी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी काफी फेमस थ्योरी है, और ये थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन कराता है कि कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन, ओशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उसके पीछे क्या रीजन था. So one information is very important here to know that 70.8% of total surface of the globe is a continent, is represented by the oceans. Okay, 70.8% of the total surface of the globe is represented by the oceans, and remaining 29.2% is represented by the continents. Okay, so 70% का जो हिस्सा है अर्थ का, that is your continent, oceans, and 29.2% is your oceans. Now let's discuss continental drift theory. So सबसे पहले तो जाने कि ये थ्योरी दिया किसने. So this theory was given by Alfred Wagner in 1912. So Alfred Wagner, he was a German meteorologist. So name यहाँ पर लिखा है meteorologist. Okay, Alfred Wagner was a meteorologist. He was not a geomorphologist. Meteorologist means who study about the weathers,
who study about the climates, ओके उसको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब इनका कहीं ना कहीं जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा सबसे जो फेमस थ्योरी जो हुआ अल्फ्रेड वेगनर का, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या था, वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना चाहते थे। ही वांटेड टू स्टडी अबाउट द रीजन बिहाइंड फॉर क्लाइमेट चेंज, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर द क्लाइमेट चेंज। टू नो द रीजन ही हैड गिवन अ थ्योरी कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो वो उनका मकसद ये नहीं था कि कॉन्टिनेंट और ओशन कैसे बना, ये नहीं समझना था। उनका मेन मोटिव था, व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड फॉर अल्फ्रेड वेगनर वाज टू नो द रीजन बिहाइंड फॉर क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ही वाज अ मेट्रोलॉजिस्ट। तो उस समय के जो भी थ्योरी उनको मिले, काफी सारे थ्योरीज उस समय आ चुके थे, तो सारे थ्योरीज को उन्होंने कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन सब जगह से कुछ कुछ लिया और उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हालांकि काफी क्रिटिसाइज हुआ इनकी थ्योरीज को, काफी साइंटिस्ट इनकी थ्योरी को काफी सारे क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन आज भी इनकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक दैट ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। इनसे पहले टेलर्स थे, टेलर्स ने बताया था इसके बारे में कि कॉन्टिनेंट इज ड्रिफ्टिंग, लेकिन उसके जो डिटेल स्टडी जो होता है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का, उसके बाद उन्होंने बताया रीजन, माउंटेन बिल्डिंग होने का रीजन बताया, उन्होंने आइलैंड्स किससे बनते हैं उसके बारे में बताया। तो सारे चीजों को बताने का जो पहला जो कंडीशन जाता है वो जाता है अल्फ्रेड वेगनर को। बट व्हाई हिज थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड? बिकॉज व्हाटएवर द फोर्सेस ही सजेस्टेड behind for drifting the continent, that forces are vague force, that force is not a real force। तो इसके वजह से इनका थ्योरी काफी क्रिटिसाइज किया गया ना। इसके इनके पीछे सबसे पहले एक हम लोग दो कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि वेगनर एक्चुअली वांटेड टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर क्लाइमेट चेंज। So for that he wanted to know why every place, why the some places in world so different variation of climate। तो अपने थ्योरी को उन्होंने प्रूफ करने के लिए, उन्होंने थ्योरी को उन्होंने जानने के लिए दो एजम्पशंस लिया। ही वाज टू टू एजम्पशंस। फर्स्ट एजम्पशन उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट इज स्टेशनरी, कॉन्टिनेंट इज स्टेशनरी, ओके, कॉन्टिनेंट नहीं मूव कर रहा, कॉन्टिनेंट एक ही जगह पे, क्लाइमेट इज चेंजिंग, क्लाइमेट इज इन मोशन। अब समझो क्लाइमेट मोशन में, मेरे क्लाइमेट एक जगह का कॉन्टिनेंट सेम है, कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर, लेकिन इस जगह पे यही कॉन्टिनेंट जो लैंड मास है ये डिफरेंट क्लाइमेट्स को एक्सपीरियंस कर रहा विद द गिवन पैसेज ऑफ टाइम। एक तो पहला एजम्पशन उन्होंने ये किया, कॉन्टिनेंट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज मूविंग, क्लाइमेट means climate is moving here, means climate each and every place experience a different varieties of climates। तो इसलिए वहां पर जो एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया, जो रॉक्स का देखा कि दैट रॉक्स और डिफरेंट क्लाइमेट्स वेरिएशन, तो उन्होंने ये पहला एजम्पशन किया। सेकंड एजम्पशन किया कि कॉन्टिनेंट इज फ्लोटिंग, कॉन्टिनेंट इज ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंट इज ड्रिफ्टिंग एंड क्लाइमेट इज फिक्स्ड, ओके, क्लाइमेट इज फिक्स्ड। दूसरा एजम्पशन उन्होंने ये लिया कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है, क्लाइमेट फिक्स है। तो उन्होंने पहला एजम्पशन को मींस डिसरिगार्ड किया, इट इज नॉट ट्रू that continent should be a stationary, okay, it should be a stationary and climate it is a motion, because when you study the heat global heat balance or heat zones of the earth, so you know tropical part always experience a good amount of sunlight, and sunlight sun's rays become more and more slanting towards the polar areas, okay, so that's why he considered the second, he had taken the second assumption as a true, and entire theory is based on a continent is drifting, okay, and climate is fixed here. So continent is drifting and climate is fixed here. So this is the main you can say crux of his theory, that how continent is drifting। तो उन्होंने उस समय का एडवर्ड स्वेस काफी फेमस ज्योग्राफर थे, उन्होंने सियाल और सीमा का कॉन्सेप्ट दिया था। व्हाट इज सियाल? सियाल इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम इज अ कॉन्टिनेंट। So whatever they see the continent, that is Edward says called Sial, and whatever see the oceans, okay, ocean floor is called a सीमा। तो उन्होंने उसके एडवर्ड स्वेस को थ्योरी को करेक्ट किया, उन्होंने उस थ्योरी के बेसिस पे अपना थ्योरी ये दिया कि कॉन्टिनेंट इज ड्रिफ्टिंग, ओके, ओवर द ओशन फ्लोर। व्हाट ही सेड दैट सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रेजिस्टेंस। उन्होंने कहा कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम, means whatever the continental crust is made by the Sial, and whatever the oceanic crust is made by the Sima। And he said that Sial, this is the Sial continental, and this is the Sima। So Sima, this is called Sima, and this is the Sial। So Sial is floating over Sima without any resistance। देखिए उन्होंने पहले अपने थ्योरी में ये बात कहा कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा
विदाउट एनी रेजिस्टेंस। बाद में जब काफी सारे साइंटिस्ट ने उनसे ये क्वेश्चन किया, यू हैड सेड दैट रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। तब उन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया और उन्होंने कहा कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा विद सम रेजिस्टेंस, मीन सीमा से जब सियाल फ्लोट कर रहा सीमा पे तो वो दैट इज प्रोवाइड अ फ्रिक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस वट एवर थिंग्स इज एक्यूमुलेटेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट क्रिएट अ फोल्ड माउंटेन। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट खुद चेंज किया लेटर पार्ट ऑफ इस थ्योरी, तो वो एक क्रिटिसिज्म बन जाता है उनकी थ्योरी का। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ही सेड दैट कि ड्यूरिंग अ कार्बोनिफेरस पीरियड all the land mass means joined together, जितने भी land mass अभी आप देखते हैं continent, now we know this total 7 continents, all continents are assembled joined together, and he said the mega continent name is called Pangea. He said that this is called Pangea, मतलब आप देखो कि यहाँ पर यूरोप पार्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का पार्ट जो है ऑल आर मींस फिक्स्ड टुगेदर, एक ही जगह पे असेंबल्ड है, ओके, मर्ज है, और उस सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने कहा पैंजिया, मींस ऑल अर्थ, मींस ऑल द कॉन्टिनेंट्स, एंड दिस पैंजिया इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज वाटर बॉडी कॉल्ड अ पैंथालासा। उन्होंने कहा कि ये जितने भी वाटर देख रहे हैं, तो सम साइंटिस्ट सेड इट्स कॉल्ड अ प्रीवियस पैसिफिक ओशन, पैंथालासा, पैंथाला मींस ऑल वाटर, पैन मींस ऑल, लासा मींस वाटर, ऑल वाटर, उस समय सिर्फ पैसिफिक ओशन था। नाउ ड्यूरिंग अ कार्बोनिफेरस पीरियड सो इट वाज अ पैंजिया। उसके 200 मिलियन ईयर के बाद क्या हुआ, 200 मिलियन ईयर एगो दिस पैंजिया वाज ब्रोकन इनटू टू पार्ट। Okay, what he said, now he doesn't talk about what is the reason behind for splitting of this Pangea in two parts, वो दो पार्ट में टूटा क्यों, इसके पीछे उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले क्या था, what was the means condition, what type of rock it was, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ कार्बोनिफेरस पीरियड से अपना स्टार्ट किया थ्योरी। उन्होंने कहा कि it was a Pangea, it was called super continent, and it was surrounded by a huge water body called Panthalassa. Now it was broken in two parts called Laurasia and Gondwana. Now Laurasia is northern part and Gondwana is the southern part. Okay, Laurasia is also known as Angara land, also you can say Angara land and Gondwana. Now you easily can find out Gondwana land include your South America, Africa, Madagascar, this is called Indian Peninsula, Antarctica, Australia, and Laurasia include your present North America, Europe, Asia, that include the Laurasia. Now, whatever the gap that is created between these two landmass, that was filled with the water, and he said this water is called Tethys Sea. Okay, what he said, the Tethys Sea. उन्होंने कहा कि जो ये कॉन्टिनेंट टूटा, सुपर कॉन्टिनेंट जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ, one is called Laurasia, northern part, second part is called Gondwana land. Now, whatever the gap is created, this gap is filled with the water, and this water name is called Tethys Sea. Now, present Mediterranean Sea, you see the Mediterranean Sea is located in this place. This is the location of Mediterranean Sea. Now, this Mediterranean Sea is the remnant of the Tethys Sea. Many of the geographers say it's a remnant of the Tethys Sea, जो कि Tethys Sea जो बना था लोरेशिया और गोंडवाना के बीच में, आज भी वो कहीं ना कहीं मेडिटेरियन सी का उसी का एक पार्ट है। ओके, सो स्लोली क्या हुआ कि दिस लोरेशिया और गोंडवाना फर्दर स्प्लिटेड इनटू मेनी पार्ट्स, और आज के टाइम में आप जो कॉन्टिनेंट देखते हैं वो आकर एक मतलब इस पोजीशन पे, प्रेजेंट पोजीशन पे आ गए हैं। तो मेन आइडिया थ्योरी का क्या था कि continent was drifting. Okay, now many of the scientists means wanted to know what is the proof behind for if it was to show me some evidences that your theory is correct है, continent is drifting. तो उन्होंने वैगनर ने अपने थ्योरी को प्रूफ करने के लिए काफी सारे एविडेंस दिए, काफी सारे प्रूफ बताएं कि दिस आर द सम प्रूफ लाइक एविडेंसेस। उन्होंने क्या क्या दिया, पहले तो उन्होंने कहा कि पहला जो एविडेंस दिया था मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट जिग्सॉ फिट। उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी कॉन्टिनेंट अगर आप देखेंगे तो दोनों कॉन्टिनेंट को जब सटाएंगे दोनों फिट विथ ईच अदर, वो बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे। खास करके ये जो पार्ट है साउथ अमेरिका का, जो बल्ज पार्ट है ब्राजील का, और गल्फ ऑफ गिनी पार्ट ऑफ अफ्रीका का, अगर ये दोनों को दिखाया जाए, दोनों को ज्वाइंट किया जाए, तो दोनों एक दूसरे से फिट हो जाते हैं, बहुत दूसरे से परफेक्ट फिट होते हैं। बट इट शो दैट कि दिस बोथ द कॉन्टिनेंट इज द वंस द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। जैसे कि आप किसी ग्लास का या किसी प्लाईवुड का अगर टुकड़ा होता है, किसी कारण से टूट जाता है, तो उसको फिर से ज्वाइन करो तो वो पूरे एक अच्छा से फिट हो जाता है। सिमिलरली द कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो स्प्लिटेड इन टू पार्ट्स एंड नाउ दे आर मूव्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन यू सी द बल्ज पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, स्पेशली द ब्राजील पार्ट and Gulf of Guinea part of the Africa, both are merged very well together, fit very well to each other. तो ये एक एविडेंस उन्होंने कहा। इसी तरह आपने
और कहा कि मेडागास्कर आइलैंड को अगर देखा जाए, मेडागास्कर को आप अगर अफ्रीका से जोड़ते हैं तो वो भी बनता है, अरबिया को भी जोड़ते हैं तो वो भी एक उसी का पार्ट लगता है। इंडियन पेनिनसुला, द पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज आल्सो फिटेड वेरी वेल विद अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इंडिकेट दैट this all continent once the part of the same landmass. The first evidence he had given called a jigsaw fit. First called jigsaw fit. The west coast of India, Madagascar and Africa seem to have been joined together. तो पहला एविडेंस, तो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which of the following evidence given by a Wagner to prove his theory. सेकेंड एविडेंस उन्होंने कहा कि रॉक्स ऑफ द सेम एजेस, कहा कि जब आप स्टडी करोगे रॉक का ऑफ साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का रॉक्स को जब सेम करोगे, कोस्टल रॉक्स को, स्पेशली द कोस्टल रॉक्स, यू विल फाइंड बोथ आर बिलोंग टू द सेम एज, same chemical property, same magnetic property. It shows that both belong to the same land mass. Though both all these two places have experienced the same type of climate. Okay, so this method is called radiometric dating method. Okay, that help to recent period facilitate the correlating the rock formation from different continent across vast oceans. Okay, so it shows that the ancient rocks 2000 million years of Brazil coast matches with those from the Western Africa. तो उन्होंने कहा कि ये जो रॉक्स हैं दैट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट इंडिकेट दैट दे बिलोंग टू द सेम क्लाइमेटिक, दे फेस द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन, दे बिलोंग टू द सेम लैंड मास। उससे भी साइंटिस्ट मतलब खुश नहीं हुए, तो उन्होंने फिर से एक और एविडेंस दिया कॉल्ड टिलाइट डिपॉजिट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू व्हाट इज टिलाइट हियर। सो टिलाइट इज अ सेडिमेंटरी रॉक, and what is sedimentary rock? Those type of rock which is formed because of deposition of sediments is called sedimentary rock. और ये जो सेडिमेंट जो डिपोजिट हुआ वो कहां से हुआ है, किससे इरोजन हो किया है? बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स। जब ग्लेशियर इरोड करता है, जो इरोड करने से जो सेडिमेंट डिपोजिट होता है, उससे जो रॉक्स बनता है उसको कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक, एंड दिस टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड टिलाइट। नाउ what Wagner said that they found the tillite means sedimentary rock that is derived from those part of present world that experience a tropical climate, that experience your good amount of sunlight, a very hot climate. So presence of glacier, it shows that somewhere some millions of years ago this continents were once the present in the southern hemisphere, somewhere very close to the Antarctica. तो कहीं ना कहीं वो उस जगह पे थे जहां पर पोलर एरियाज में थे, जहां पर आज के टाइम में ग्लेशियर्स, तो ये सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में काफी साउथ में थे, क्योंकि सारे जगह से टिलाइट डिपॉजिट का कलेक्शन मिला, एविडेंस मिला। तो फॉर एग्जांपल दे डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। इट शोज दैट दिस ऑल प्लेसेस एक्सपीरियंस द सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड इट वाज present somewhere very close to the south pole that experienced a very cold condition and glacier was present. So glacier was present. At present we know that tropical areas में glaciers हैं, लेकिन वो कहाँ पर? at the height of 6000 meters above the sea level, 6000 मीटर से ऊपर जो है वहां पर ग्लेशियर्स मिलेंगे। लेकिन व्हाट इज टिलाइट डिपॉजिट? इट शो दैट ग्लेशियर वाज प्रेजेंट ओवर द प्लेन एरिया, नॉट ओवर द माउंटेन्स। कहीं ना कहीं माउंटेन्स के नहीं, प्लेन में कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स थे। सो इट आल्सो इंडिकेट दैट, इट आल्सो प्रूव दैट ये ग्लेशियर्स कहीं ना कहीं प्लेन में थे, एंड ऑल दिस कंटेंट वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास एंड एक्सपीरियंस द सेम टाइप ऑफ इरोजन एक्टिविटी दैट इज डन बाय द ग्लेशियर्स। तो ये कहते हैं टिलाइट डिपॉजिट। दूसरा उन्होंने एविडेंस बताया कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। व्हाट इज कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट? सो समथिंग इज डिपॉजिट बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द रिवर। जब रिवर फ्लो करता है तो कुछ ना कुछ इरोड करता है, मींस सम पार्ट रॉक्स हैव सम वेदरिंग, some dissolved parts, so they are mixed with the waters, and when water move some distant location, it deposit these sediments. तो कहा जाता है कि जैसे कि घाना इज अ कोस्टल एरिया, कोस्टल पार्ट ऑफ अफ्रीका, वहां पर गोल्ड का मिलना, ठीक है, वहां का गोल्ड वहां पर काफी मिलता है, लेकिन वो गोल्ड का मेन जो गोल्ड बियरिंग वेन्स है, जो गोल्ड आया कहां से, वो वहां पर कंप्लीटली एब्सेंट है, पूरे अफ्रीका में कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं वेगनर कहते थे कि जो ये अफ्रीका का पार्ट है और साउथ अमेरिका का पार्ट है, वो जो ब्राजील पार्ट है, बोथ आर मींस ज्वाइंट टुगेदर, वंस इट वाज ज्वाइंट टुगेदर एंड देयर वाज अ ह्यूज रिवर वाज फ्लोइंग। वही रिवर जो है इरोड करके गोल्ड बेयरिंग वेन्स जो आज के टाइम में ब्राजील में है, वहां से इरोड करके अफ्रीका के उस पार्ट जो जहां पर लाके डिपॉजिट किया था, सेडिमेंट डिपॉजिट किया था, इसलिए देयर वाज अ डिस्कवर ऑफ गोल्ड्स। क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रॉस अ रिवर, अटलांटिक ओशियंस को क्रॉस करके जाकर अफ्रीका में वो इरोड वो लाकर डिपॉजिट करे, बिकॉज नाउ अ वेरी ह्यूज अटलांटिक ओशन इज प्रेजेंट बिटवीन दिस टू कॉन्टिनेंट।
तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये दोनों कॉन्टिनेंट एक समय में एक ही लैंड मास थे, जहां पर एक रिवर थी और जो रिवर इरोड करके मटेरियल्स को लाके वहां पर डिपोजिट किए थी। एंड इट इज ऑब्वियस दैट गोल्ड डिपोजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। तो उन्होंने कहा प्लेसर डिपोजिट। सो रिमेंबर व्हाट इज प्लेसर डिपोजिट? प्लेसर डिपोजिट समथिंग व्हिच इज डिपोजिटेड बाय अ रिवर्स। इससे भी हुआ तो उन्होंने फिर फॉसिल्स का एविडेंस किया। उन्होंने कहा कि एनिमल्स के बारे में बात करते हैं कि कुछ ऐसे लैंड एनिमल्स थे, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स थे जो कि फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स थे, लाइक क्रोकोडाइल आज के टाइम में है। तो ये ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनका फॉसिल जो है साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दोनों कोस्टल एरियाज में मिला है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस ह्यूज वाटर बॉडी एंड रीच वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट बाय एनिमल्स। तो ये उन्होंने कुछ ऐसे फोर फॉसिल्स एग्जांपल बताए थे, जिसमें कुछ एनिमल्स के नाम है मेसोसोरस, सिनोग्नाथस, लिस्ट्रोसोरस एंड ग्लोसोप्टेरस। तो ये सारे एनिमल्स के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ फॉसिल एविडेंस दैट वाज गिवन बाय वेगनर। तो मेसोसोरस इज नोन टू बी अ टाइप ऑफ रेप्टाइल सिमिलर टू द मॉडर्न क्रोकोडाइल। आज के टाइम में जो क्रोकोडाइल देखते हैं उसी तरह मेसोसोरस भी था, विच प्रोपेल्ड इटसेल्फ थ्रू वाटर विद इट्स लॉन्ग हिंड लेग्स एंड लिम्बर टेल। तो ये जो वाटर जो क्रोकोडाइल्स टाइप के जो एनिमल्स हैं, दे इट मींस दिस टाइप ऑफ एनिमल लिव इन अ फ्रेश वाटर। ओके, फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स है ये। तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस एनिमल टू क्रॉस 4800 किलोमीटर फ्रॉम अफ्रीका, साउथ अमेरिका टू अफ्रीका। तो उतना लंबा स्विमिंग करके ये वहां जा नहीं सकते हैं। तो उसका जो फॉसिल्स है वो दोनों जगह पे डिस्कवर हुआ। It shows that कि both the continent were once the part of the same landmass. Similarly, जो other animals के जो species मिले हैं, like Sinognathus, ये जो लैंड एनिमल्स हैं ये देख सकते हैं। तो इनका एविडेंस जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों जगह मिला, तो ये पॉसिबल नहीं है इस एनिमल्स को कि ओशंस को क्रॉस करके वहां पर पहुंचे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बोथ द कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो ये एविडेंस प्रूव करता है that these fossils indicate that all the animals belong to the same landmass. So you see fossils remaining of Cyanograthus triassic land reptile, ये कहाँ पर है? आपको साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिला। सिमिलरली फॉसिल एविडेंस ऑफ लिस्टोसोरस यहाँ पर इंडिया से मिला, अफ्रीका से मिला, ठीक है, अंटार्कटिका से मिला, ठीक है। सिमिलरली हियर योर दिस एविडेंस इज आल्सो फाउंड दिस टू कॉन्टिनेंट। इसके साथ उन्होंने एक फौना जैसे फ्लोरा हुआ उस तरफ फ्लोरा का भी एविडेंस दिया। कॉल्ड ग्लोसोप्टेरस इज अ फॉसिल फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो इस सारे जगह से पाया गया। तो इट मींस द वेजिटेशन, सी इफ यू वांट टू नो द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस यू शुड नो द वेजिटेशन। सो वेजिटेशन इज अ indicate the type of climate that place experience. Okay, the fossils evidence मिला इन सारे continents से, so it indicate that this all continents once the part of this same landmass. Now what was the forces responsible for behind the drifting of the continent? तो उनसे जब पूछा गया वेगनर से कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, व्हाट आर द फोर्सेस, तो उन्होंने दो फोर्स बताए। जब कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट कर रहे थे वो टू डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, एक तो इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं एंड दूसरा ड्रिफ्टिंग हो रहा कहाँ? वेस्टवर्ड, वेस्ट की तरफ। तो उन्होंने कहा जो इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्टिंग हो रहा दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स कॉल्ड पोल फ्लिंग फोर्स। मींस पोल से जो फोर्स दूर इक्वेटर की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा that is called a centrifugal force. Okay, that is caused by earth rotation. So because of gravitational differential and the force of buoyancy, the resultant force make the continent drifting toward the equator. So like peninsular India is drifting, okay, Africa is drifting, okay, toward the equator. And westward, what he said that why continent is drifting westward? Because of the tidal force. Now same tidal force, what you know in oceanography, that tides generating force means a pole that is called a force, that is gravitational pull of sun and moon, calls for rising and fall of sea level twice a day, is called tides. And what is the reason behind for gravitational pull? So what Wegener said that this gravitational pull of sun and moon is responsible for drifting of the continent westward. It was completely a vague force, कि ऐसा फोर्स हो ही नहीं सकता है जो कंटिनेंट को ड्रिफ्ट कराए वेस्टवर्ड। तो ये सबसे बड़ा उन्होंने जब थ्योरी दिया, उन्होंने जब इस थ्योरी को बताया, तो उस सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक थ्योरी का यही बना कि उन्होंने जो फोर्स को रिस्पॉन्सिबल कहा। मेनी साइंटिस्ट जो भी फोर्स उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताया
Okay, so what was the means demerit of his Wagner theory? The first demerit is whatever the force he suggested the force called continental drift tidal force. That force is not sufficient for drifting of the continent. Second one is both the coast of Atlantic Ocean cannot be completely refitted. He said that jigsaw fit. He said jigsaw fit. So jigsaw fit is not means this is also because of some. It will be a classroom type in a coming days. It will be a classroom type. It is just a introduction class. That's why it is a PPT, but it will be all classroom types. Will start very soon. So jigsaw fit because it is also a content. Coastal land is always modified because of sea waves, okay, and ocean currents. So proofs heavily depend on assumptions that are generalistics. So Wagner theory is not able to means whatever the force he suggested, that force is not responsible for drifting of the continent. That was the main demerit of his theory. Okay, Sial and Sima theory explained by Wagner was also wrong because what at present plate tectonic theory proved that Sial and Sima belong to same. Okay, they are not different. Continent and continental crust and oceanic crust both are the part of lithosphere. At present situation, what we know, lithosphere is floating over asthenosphere, not Sial is floating over Sima. This is the lithosphere is floating over asthenosphere, and this is not the continent is drifting. This is the plate. This is the according to recent theory. What we know, this is the plate which is drifting. This is the plate which interact with each other, and that responsible for creation of mountains on the surface of the earth, formation of volcanic eruptions, a different part of the world. Okay, whatever the features you see on the surface of the earth and changes that is take place on the surface of the earth, this all happened because of the plate tectonic, means plates are interact with each other. So despite all demerits, Wagner theory is still a very important that help us to know that first one to explain about the drifting of the continent. He had suggested some forces, and that forces make scientists more curious to know what is the reason behind for drifting of the continent. So after this, the convection current theory was formed, given by Arthur Holmes. He said that convection current theory is responsible means for drifting of the continent, means mean the plates are interacting because of a convection current. So when we'll have a class on when we start geomorphology class, so in that case we'll discuss convection current theory and plate tectonic theory. So just like your demo lecture, very soon whenever our class will start, we will have a we will inform you and we'll give you notification. Now tell me, if you have any doubt, you can ask me a question. If you have any doubt, you can ask me a question from this theory. Or we'll have another session next day, so we'll meet you to discuss on environment. So our demo lecture will be environment, will be on next day, so we'll discuss some important topic of environment. Okay, thank you and good night to everyone.